Yes, Sharad. Good Yeah, evening. okay. Please call Ram and Rajneesh also, na? Join in time. एक मिनट calling. Mhm. सर ज्वाइन कर रहा हूँ जस्ट कॉल किया yes yes Hello, good evening. Can we start our class? यस yes सर। Yeah. Okay. Where is Rajneesh? सर रजनीश तो बोला था रिकॉर्डिंग वीडियोस में देख लूंगा मैं, अभी आ रहा है वो। क्या चीज? सर वो बाहर है, साइड पे गया है कहीं। ओके, कोई बात नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है। Now I am presenting my screen. As of now, we have completed house price prediction using linear regression, correct? yes यस सर। Same project is mark prediction. Same project is mark prediction using this one linear regression, है ना? Multi-level values. Now I will show you the data. My screen is visible, na? yes Okay. Now this is basically this is a data mark prediction. Tell me what are the factors if I want to predict the marks of students' marks. What are the factors? What are the features included? Hours, how many hours the student is basically studying. What's the age? Either internet facilities are available or not. Based on these features, we are going to predict. If he studies 6.8 hours and age will be 15, and internet connection, 1 means yes or 0 means no. Yeah, internet connection. Approx he get 78.5%. And if he study 8 hours and 8.6 hours and the age is 19, and yeah, internet facilities is also there, then he got 84.19%. Okay, means these are the independent value or our marks of get it a dependent value.
Okay, you have to predict, you have to do this assignment. Same, every point should be covered. Salary estimation using polynomial. I will tell you this one. First of all, I go through the data. If I want to predict the salary of a specific employee, then tell me, okay, simple data is salary estimation, simple data. Acha, in IC, have you given the exam of an IC or any other competitive exams? Level should be there, na? Yes, sir. Level first grade, level second grade, level third grade, level fourth grade, level 5 grade, level 6 grade, level 10 grade. He got salary of this much, है ना? Based on this, I will show you the, I will tell you the algorithm. Rest everything you have the you should have clear idea. Salary prediction using polynomial regression. What do you mean by polynomial? You have seen linear regression, straight line, है ना? Now we are going to see polynomial regression. First of all, understand the business problem. According to that, we have to collect our data set. We have X as a label, Y as a salary. If level is 1, then salary. If level is 2, then salary. Simple project. है ना? Then after that, summarizing the data, shape. I want to see the shape, number of columns, number of rows, what's the structure, dataset dot head, segregating x and y, ilog. Here it is using ilog function, except -1, show me everything, including -1, stored in this variable, stored in this variable. Okay, now algorithm is, as of now you have seen linear regression, means if one quantity increase, then automatically another quantity will increase. What is polynomial regression? Basically it's covers, try to covers each and every point. Polynomial equation of the data with the curvilinear relationship, कर्व. देखो डेटा का फ्लो ऐसे है, जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं ना वो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा. ब्लू वाले जो है वो ट्रेनिंग डेटा है और देन रेड वन इज टेस्ट डेटा. व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल रिग्रेशन? पॉली मींस मेनी, पॉलिनोमियल Yes. रिग्रेशन, पॉलिनोमियल. प्लीज अगर बता देना, मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो प्लीज बताना, बीच बीच में मुझे रिस्पॉन्स करते रहना Yes, sir. ताकि समझ में आए कि नेटवर्क प्रॉपर है. Now, what do you mean by polynomial regression? Polynomial equation on the data with curvilinear relationship, because data spreads equally. Data spreads unequally, so that we can try to cover each and every point of the data. Target variable and independent variable. Curvilinear relationship होता है target variable and independent variable. Then what train us using linear regression, है ना? Polynomial regression, x this way, convert normal features x into polynomial y, polynomial format, train in linear regression polynomial format, visualize through graphs data. You can also do this. I will send you the file, no issue, you can. Now, stocks price prediction using support vector machine. What, tell me, what are the factors responsible for stocks price prediction? If you want to predict, है ना, if you want to predict stocks price prediction, here independent variable, based on that price is this, based on x stocks price is this, based on x stocks price is 6. These are the number of stocks, considered it as a number of stocks, and these are the price. I will explain you support vector machine, SVM. SVM. Basically, we are going to predict stocks prediction using support vector machine. Okay. Then first of all, we have to collect our data, stocks price data.
predicting stocks price data set stocks value used for another parameter. Hmm? X parameter, Y parameter. X means independent variable or Y means dependent variable. Summarizing data, data dot shape, data dot head, segregating data into X and Y. Yeah, I have already told you what is this. I have already told you, explain you this ilog function. Ilog basically used first show will all columns or rows and except minus one, except last column give me all details, and output data set dot ilog. I want all rows and column minus one, last one, and put into a y-axis, which is output, which is dependent variable. Now after that, training the data into trend set split. Now, this is algorithm. Try to understand support vector machine algorithm. What are the following parameters? Now, new points are added in the space gaps to classify the points based on the gap it lies. As of now, I have already told SVM. Tell me, what is SVM? Either supervised or unsupervised? Tell me. Tell me fast. SVM is supervised or unsupervised? सुपरवाइज के बेसिस में रहेगा सर शायद Hmm? मे बी सुपरवाइज के बेसिस में होगा क्या Tell me. क्या है सुपरवाइज्ड में? क्या सर जो क्लासिफायर और सुपरवाइज रिलेशन? क्लासिफिकेशन का है सर ये। क्लासिफिकेशन क्या है ना? यस सर, मेरे है को ना? सर तो आवाज these नहीं are the आ रहा था। classifies हाँ। the तो points वही बता रहा based on the gaps. It's classifies. This line is basically x1, this one plus b plus e. These are the algorithm. This is a positive upper one and this is a negative. Function y is equals to w xi plus b plus e. Evaluation matrix is known as derivatives. This is basically a concept of derivatives. Have you heard about integration and derivation differentiation यस in class, in 12th class or 10th class? यस यस इन सर। मैथमेटिक्स Yeah, here this concept will be used. Okay, training using SVM predicting. I am predicting and validating our model with R2 score and mean square error. I am predicting with R2 score or mean square error in this way. I will show you the assignment of this. I think stocks price prediction. No, the data set is not good. So just practice. Simple data is there. Similar, all these are similars. Height prediction using tree. Decision tree regression. Height prediction. As of now, age, based on the age, height will be increased. If the age is 10, then height will be 138 centimeter. I think the data is in centimeter, because if it is in feet, then it's a huge value. है ना? 11 age is, if the 11 itna centimeter. If 56, age will be increased. Understand now? Independent variable, dependent variable. Now I'm going to do the practical. Google Colab. Let it be load first.
stocks price prediction. I will show you, just wait. Now I am going to upload data set, connecting to runtime enable file browser. Now stocks price prediction, this is my data set. I am now uploading my data set. First step is support vector machine. Now first step is importing all the libraries and modules. Then you can download your data. You can upload your data from here also. Choose the file or cancel upload. Okay. Now read data set, summarize data set, segregating data into X and Y, splitting data set into testing and models. First of all, training data, splitting the data into 80% and 20%. How much data it is? Let me check. 20% means 80% for testing data, or sorry, 20% for testing data and 80% for training data. I have used SVM, support vector machine, from sklearn.svm, import SVR, support vector regression. Then it is a model. I put in the variable model dot fit x train y train, means 80%. These are the data. X train 80%, y train 80%. Prediction of all the test data for validation. SSRES is the sum एक्चुअल of में सर square. Yeah, tell me. सर ये फीचर स्केलिंग हम लोग करते हैं ना सर, तो उसमें जो ऐसे स्टैंडर्ड स्केलर से, तो हाँ जो हम एक्सट्रेन लेते हैं एस सी डॉट फिट ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक्सट्रेन की वैल्यू डालते हैं, और एक्सेस में एस टेस्ट। सर इसमें एक डिफरेंस है थोड़ा, फिट डॉट ट्रांसफॉर्म आता है एक्सट्रेन के लिए, और एस हाँ। टेस्ट के लिए बस ट्रांसफॉर्म आता है, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कैसे, एक बार और थोड़ा सा रिपीट करोगे क्या क्वेश्चन? सर जो फीचर स्केलिंग करते हैं ना हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है राम। अब आ रही है सर? हाँ हेलो। अब बोलो, थोड़ा थोड़ा स्पीड, थोड़ा जोर से बोलो। और हाँ मैं ये बोल रहा था सर, जो फीचर स्केलिंग करते हैं ना हम लोग, तो उसमें स्टैंडर्ड स्केलर जो यूज करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, हाँ दो तो चीज यूज फीचर करते स्केलिंग। हैं। उसमें से अपन स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करते हैं। हाँ आगे बोलो। जी सर। तो एक्स ट्रेन जो लिखते हैं ना हम लोग, एक्स ट्रेन इक्वल टू एस सी डॉट फिट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें एक्स हम्म ट्रेन का पैरामीटर पास करते हैं। फिर जो एक्स टेस्ट करते हैं ना, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, तो इसमें सिर्फ एक्स टेस्ट के लिए सिर्फ एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, और एक्स ट्रेन देखो के लिए फिट ट्रांसफॉर्म का करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखो 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 देखो, ऐसे अगर स्पेसिफिक पूछोगे, स्पेसिफिकली देखो, सबका सिंटेक्स है अलग अलग। कहाँ पर से एक बार दिखाओगे क्या चीजें? आप अभी खोले हो क्या? बोला नहीं हो सर, प्रैक्टिस कर रहा था तो वहां जाके समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, कुछ नहीं तो देखो, एक्चुअल में लिखने का वो सिंटैक्स है, उसको हटा के लिख के देखिए क्या आप। नहीं सर, थोड़ा ये आया था, इसमें किया था ना हमने सर सैलरी एस्टिमेशन में। हाँ सैलरी एस्टिमेशन जब फीचर स्केलिंग करते हैं डाटा मैपिंग करने के बाद, जो, हाँ, तो सर बस एक्सट्रेन, बस वो पूछना था डिफरेंस क्या है फिट ट्रांसफॉर्म में और ट्रांसफॉर्म में। सिर्फ ट्रांसफॉर्म में और फिट ट्रांसफॉर्म में। फिट। देखो ये जो फिट कर रहा है ना, फिट, हाँ ये एक फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, ये हाँ। मॉडल के साथ, ये मॉडल जो आपने एसवीआर, इस मॉडल में इसको पुट यस कर रहा है ट्रेनिंग जी करने सर। के लिए, ये फिट जी हुआ। और ट्रांसफॉर्म यस। मतलब वो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका ओके। डेटा टाइप के साथ खेल रहा है, सेम डेटा सेट को ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसको मैं ना आपको देखूंगा ना प्रैक्टिकल, ये इसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल होगा ना, तो और अच्छे से इसको बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर। फिट मतलब तो देखो, मॉडल में एक्चुअल में फीड कर रहा हूँ। हाँ ये तो, हाँ ये तो समझ में आ गया सर, फिट फिट कर ट्रांसफॉर्म, दिया आपने एक्सटेंड वाइटन इसमें तो मॉडल में मैं फिट। जब प्रैक्टिकल आपको मैं मतलब देखूंगा ना चीजें, हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, तो उसको अकॉर्डिंग मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। जी। एक कॉमन रिस्पॉन्स ये है कि इसका सिंटैक्स होता है ऐसी, इसी वे में लिखोगे। अगर यहाँ फिट नहीं लिखोगे ना, तो एरर मार देगा ये। हाँ सर। समझ रहे हो? तो ये इसका यस सर। फंक्शन है, इसको फिट करना ही पड़ता है। ये इसका ठीक है। सिंटैक्स है लिखने का।
हाँ, दूसरा सिंटैक्स हो सकता है मॉडल में फिट करने का, उसमें से यस ये एक सिंटैक्स है यस सर। ऐसा। ठीक है, वैलिडेशन, SSRC और ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मैं क्या किया, मान लो मॉडल को मैंने ट्रेन कर लिया। अब ट्रेन करने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट आवर मॉडल। फॉर यस प्रिडिक्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देना, ये आपको पता है क्या चीज हो, एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट मतलब 20% मेरा इंडिपेंडेंट डेटा, यस सर। इंडिपेंडेंट डेटा है जो प्रिडिक्ट कर रहा है, मॉडल मैंने डाला और प्रिडिक्ट करवाया। ये सिंटैक्स है लिखने का, जो भी प्रिडिक्शन होगा है ना, वो वाई प्रिडिक्ट में डाल देगा। अब ये जो एक्चुअल है हमारे पास, वाई टेस्ट है ना, और वाई यस प्रिडिक्ट, दोनों को कंपैरिजन करेगा R2 स्कोर से, मीन स्क्वायर एरर से। आफ्टर कंपैरिजन इट विल शो यू द एरर, कि कितना एरर है मॉडल में। आफ्टर दैट यस इट विल कन्वर्ट इनटू अ, दैट इज परसेंटेज। चलो मैं इसको थोड़ा सा रन करके, कहां तक हुआ था, यहां तक हो गया था। नाउ ट्रेनिंग द डेटा using the model. Now y prediction, after that r square error, mean है ना, रूट मीन स्क्वायर एरर इसका इतना है। इसका मतलब अगर ये एरर है, ये बता रहा है ना, और एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कंपैरिजन 86%, दैट्स ऑल, है ना। इसको करके देखना। अच्छा, आप लोग कैगल का यूज किए थे क्या? अभी तो सर यही, उसमें भी तो यही आता है, अभी सर यही इसी को कर रहे थे, कर लिया ये सब। अब करेंगे सर इसको भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, कार प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। अब इसका सबसे पहले देखो, अगर मुझे कार प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फीचर्स रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द कार। कार आईडी, सिंबलिंग, कार नेम, फ्यूल टाइप, एस्पिरेशन, डोर नंबर, है ना, कार बॉडी, ड्राइवर व्हील, इंजन लोकेशन, व्हील बेस, दीज ऑल आर फीचर्स। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या ये सारे फीचर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? ये सारे फीचर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्या? नो सर। नहीं ना। नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पास फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग हाँ नहीं, यहाँ पास अपन फीचर सिलेक्शन करेंगे। फीचर सिलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज माय मेन एम, मेन गोल, आई वांट टू प्रिडिक्ट द प्राइस। तो व्हाट आर द फीचर्स which is strongly dependent to predict the price? कार आईडी की कोई जरूरत है क्या? ये फीचर्स कोई काम का है क्या हमारे लिए? नो सर। नहीं ना। नहीं फ्यूल सर। टाइप हमारे लिए काम का है। फ्यूल टाइप यस भाई सर। डीजल है कि पेट्रोल है ना। यस डोर नंबर भी कोई काम का नहीं। कार की बॉडी कैसी है, स्टील बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, कैसी है ना, ये भी एक अच्छा सर। फीचर्स हो सकता है। इंजन कहाँ है उसका, आगे है, पीछे है, कौन सा इंजन है, ये सारे समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। इंजन टाइप क्या है, ऑल दिस आर द स्ट्रॉन्ग फीचर्स विच हेल्प मी टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, इसको हम अपन करते हैं। Where is how I can, I will show you. I am using Panda only. Okay, Panda. Okay, after that I run this and I am uploading my file from this command. Choose the file. I am using dataset. This dataset. Okay, open. Now I get the data. Then after that
I get the data. After that, I am loading my data to a variable data set. Data set dot drop. Try to understand. I am segregating. First of all, loading and then segregating. कार आईडी को हटा दिया, मैं कार आईडी को ड्रॉप कर दिया एक्सेस 1 से, ठीक है, ड्रॉप हो गया कार आईडी. नाउ डेटा सेट डॉट शिव, डेटा सेट डॉट ऐड. जस्ट अ मिनट ना. हेलो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यस राम. सर, मुझे. ओके सर. या okay, sorry. Okay, now where we are, we are in, we are in data set na. We have loaded this one. Okay, we are here. राम, शरद, बस यस समझ सर. में आ रहा है क्या आप लोग को? यस सर. हाँ शरद, सर, आप थोड़ा कोड थोड़ा। रीड कर पा रहे हो क्या, चीजें मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर, इसी समझ में में आ रहा गूगल है ना कोलैब में। शरद? हाँ, गूगल कोलैब भी से मैंने किया था ना लास्ट टाइम। स्पेसिफिक कैटेगरी किए था थे ना ना, जो जीत इजी वे पाए में तो हो मैंने गया तो था ना इसमें? सेम यहीं से किया था डेटा सेट को जो हाँ सैंपल हाँ हाँ, वगैरह डाले। तो इजी वे में हो गया था ना, प्रॉब्लम तो नहीं फेस किए थे गूगल कोलैब में? नहीं सर, वो अपलोड थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है वो। गिट हब से मैंने निकाला था। गुड गुड, हाँ हाँ गिट हब हाँ. से ये सब ढूंढ के थोड़ा बहुत रिसोर्स से मैं चलो, रिसर्च करना पड़ता है। हाँ आपको मैं वही बताया भी करना नहीं था। पड़ता है. हाँ गुड गुड, चलो ठीक है.
तो हमने यहाँ क्या किया समझ में आ गया. आफ्टर दैट शेप, data set dot shape. How many rows? 205 rows. How many columns? Total 25 columns. Okay. After that, data set dot head. Head meant it will show you all the columns. Car name, fuel type, is type, door number, body. These are all features. 5. Price. According to that, it's a price. Now splitting data. आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि प्राइस को ड्रॉप किया कॉलम से, एक्सेस कॉलम से, और किसमें जो भी बचा डेटा वो एक्स डेटा सेट में डाल दिया. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेटा सेट डॉट ड्रॉप प्राइस एक्सेस कॉलम एंड पुट इनटू एक्स डेटा सेट. आफ्टर दैट रेस्ट x data type, select data type, execute object. Object means, what do you mean by object? As of now you can see here car name. This is a object, object data type, object है ना. car name, fuel system. Okay, these are the object, these are the numeric value. What I am saying, select data type है ना, exclude हटा दो ऑब्जेक्ट को कॉलम से, एंड देन एक्स डेटा सेट न्यूमेरिकल कॉलम्स को एक्स में डाल दो. थोड़ा सा डेटा फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ईडी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं हम, चीजों को समझ रहे हैं हम. अच्छा, हमारे लिए ये कार बॉडी, एनी यूज ऑफ कार बॉडी? नो ना. any use of car name? No. These are the object data types. Yes, sir. Fuel type, object data types है ना. Either you have to convert into a numerical value by mapping it, or either you have to remove this. In this project we are going to drop and rest columns I put here, and after that select data type, execute object type, exclude एग्जैक्ट टाइप कॉलम है ना, ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम को एक्सक्लूड किया. आफ्टर दैट एक्स डेटा टाइप न्यूमेरिकल columns will be put in the x. What are, look here, what's you get, look here, you can see only numerical values with there. There is no object value in your data set है ना. समझ में आ गया ना. नंबर टाइप के वैल्यू हैं इसमें, कोई भी आपको कार नेम और वो नहीं दिख रहा, एक्सक्यूट हो गया, एक्स डेटा टाइप में आ गया, एक्स में. क्लियर. आफ्टर दैट as of now I have dropped price ना, from whole data set I have dropped price, उसको निकाल दिया मैंने, प्राइस को हटा दिया, और जितने भी थे ना, जितने भी बचे हुए कॉलम्स थे, जितने भी बचे हुए कॉलम्स थे वो मैं एक्स डेटा वेरिएबल में डाल दिया, और उसमें से भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया एक्स डेटा टाइप में से, सेलेक्ट किया डाटा टाइप और एक्सक्लूड कर दिया ऑब्जेक्ट को. जो ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप थे ना उसको एक्सक्लूड कर दिया, और जो भी बचे उसको न्यूमेरिकल कॉलम में डाल दिया, और उसका एक डेटा सेट न्यूमेरिकल कॉलम्स. दीज आर योर न्यूमेरिकल कॉलम्स है ना. और जो प्राइस था डेटा सेट में उसको मैं वाई एक्सेस में डाल दिया. आई थिंक ये क्लियर हो गया. क्लियर है ना. क्या हुआ यहाँ पास, इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा. आफ्टर दैट स्केलिंग एंड independent variable features. Okay, scaling, feature scaling. sklearn dot pre-processing import scaler scales. Now x means independent data. As of now the values are very fluctuating. Here 88, this columns 180, 168 है ना. The magnitude of this value is very high. Curve weight this much, it will fluctuate your answer, it will fluctuate your model. So that we have to do scaling, so that you have to do scaling. So we have doing scaling x column. In x column I am doing scaling, column down data frame scales x है ना, x dot column में फिर से जो भी स्केल होके आया कॉलम उसमें डाल दिया, और x. After that look the result. Now you can see here the value will be changes to 1 1 0 1 -1 -1. In this way value will be changed.
है ना, scaling. This is known as scaling, so that the magnitude of your answer will be 0 1 or less than 1 in this way, or approximation, है ना. 205 rows and 14 columns will be there. Okay, splitting data into train test. Okay, I have segregating data into 80% data for test and 20% data for train. Now I am using random forest regression. This is my model. I have put model dot fit 80% for training, and after training I'm going to evaluate my model, है ना. प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट 20% से मैंने प्रिडिक्शन किया और जो भी इसका प्रिडिक्शन है वाई प्रिडिक्ट में डाल दिया. फिर R2 स्कोर के थ्रू मैंने वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट को कंपैरिजन कर दिया R2 स्कोर फंक्शन से, और जो भी आया यहाँ पास डाला और इसका एक्यूरेसी स्कोर डाल दिया. कितना परसेंट मेरा वैल्यू एक्यूरेसी दे रहा है, 90%. दैट्स ऑल. समझ में आ गया ना. राम, शरद, यस राम, राम, यस सर. समझ में आया. हेलो. हाँ सर, आगे ठीक है. थोड़ा सा सर जो आपने एक्यूरेसी स्कोर वाला बताया ना, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए मैट्रिक्स के थ्रू. और सर एक्यूरेसी मैं ये स्कोर पूछ रहा वाला था. R2 हाँ सर. स्कोर था वो. R2 स्कोर मैं ये बता देता हूँ. ये एक्चुअल में वैलिडेशन का वन ऑफ एक मेथड ये भी है. वैलिडेशन का R2 स्कोर भी मेथड है. ये क्या कंपेयर करेगा दोनों को. जो यस सर. आपने एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी वाई टेस्ट एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल यस सर. वैल्यू है ना, और प्रिडिक्टेड वैल्यू तो ये है. दोनों को कंपेयर करके उसका एक्यूरेट वो दे देगा, परसेंटेज में उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा. दैट्स ऑल. मतलब आपको वैलिडेशन के लिए आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हो, R2 यस. स्कोर का यूज करते हो, स्क्वायर एरर का यूज करते हो, है ना. ये सारे मेथड्स. यहाँ R2 स्कोर का यूज किया है फॉर डेटा इवेल्युएशन, फॉर इवेल्युएशन योर मॉडल. यस आई सर. विल गेट 90% ऑफ एक्यूरेसी इन दिस. ठीक. अब देखो मैं पूरा चीज बताऊंगा. देखो होता क्या है ना, अब थोड़ा सा मैं स्टेप बताता हूँ, ध्यान से समझना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. देखो क्या होता है, मान लो अब ये मुझे मॉडल मिल गया. मैंने बोल दिया कि ये मॉडल मेरा 90% एक्यूरेसी दे रहा है. मॉडल जो होता है ना वो डॉट पीटी फाइल होता है. पीटी फाइल और भी बहुत सारे फाइल्स इसके बनते हैं, है ना. तो ये जो मॉडल मिल रहा है ना, ये मॉडल को हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं. ठीक. अब इस मॉडल को ना जब हम एपीआई बनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई? एप्लीकेशन इंटरफेस. एप्लीकेशन एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो प्रोग्राम के साथ लिंक करेगा. जब आप एक वेबसाइट बनाओगे और अपने इस मॉडल को यूज करोगे, तो जब ये सारे पैरामीटर्स डालोगे ना, जितने भी पैरामीटर्स आपने लिया है, जितने भी फीचर्स लिए हैं, वो सारे डालोगे, तो वो ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट कर देगा आपके लिए कि आपका प्राइस है. ऐसा उसको डिजाइन करना पड़ता है चीजों को. अभी तो हम सिर्फ मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो देन वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल. दैट्स ऑल. एंड गो थ्रू ऑल द एल्गोरिथम्स, है ना. वी आर गोइंग थ्रू यस. ऑल द एल्गोरिथम्स एंड जस्ट वी आर ट्रेनिंग द मॉडल. मॉडल ट्रेन होने के बाद क्या होता है, उसका मॉडल ट्रेन होने के बाद उसको यूज करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं. अगर अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है तो डिप्लॉय करते हैं सर्वर में, और उसको फिर लोग यूज करते हैं. यस. क्लियर है. राम, थोड़ा सा आइडिया हुआ क्या. शरद, हाँ सर, हो गया. यस कि हम मॉडल को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एक आध प्रोजेक्ट दिखाऊंगा. ठीक है, टेंशन मत लेना. उस वो लास्ट में भी वो प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा उस टाइप से. थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है. कार अब ये सेम दिख रहा होगा कि नहीं आप लोग को, सारे सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, बस एल्गोरिथम चेंज हुआ है, मॉडल चेंज हुआ है ना. ठीक है. इवेल्युएशन, देन अगेन we have done evaluation also. Here also classification model performance, we have done the evaluation. Similarly this is also evaluation for R square and adjust R square. These two methods we evaluate our model. Okay. Now we come to regression. Regression model for selecting engine, है ना, एनर्जी प्रेडिक्शन. energy prediction. Now look here.
Where is engine? Where is, no, let it be. Stop this. I have to, let's go through these ones. There is a data set. Let's look me area and price. Yeah, okay. Now this data set to area and price. Okay. Now I am using this model. Now I am to use in the Google Colab. I am using this notebook. I am using Google Colab. Evaluation regression. Okay, evaluation regression. There is a network issue. Okay, how many topics left? Let me go through once. Just do one thing, Ram, Sharad. Yes, sir. Yes. I'm going to send you all these files. Hmm. Just go through once all these files, and please tell me tomorrow. Tomorrow you can you come? I want to see each and every project in your system.